Vande Mataram friends, Jai Hind. In last lecture, I explained you the fundamental theorem. Okay, now in this lecture, the sums which are based on fundamental theorem that I am going to share with you. 6.2 sum number 1 in figure. First, this one. It is saying that DE is parallel to BC. DE parallel BC. And you have to find EC. This one. Is it clear? And in second one, you have to find AD. Okay. Now you know, as per the proportionality or the fundamental theorem, you can write like this way: AD upon DB. Now you have to direct write the result equal to AE upon EC. Reason you can write by proportionality theorem. Is it clear? By proportionality theorem, therefore, what is the value of AD? 1.5. So 1.5 upon DB, that is 3, equal to AE is 1 upon EC. You don't know, so you write as it is. Now keep one thing in your mind. एक चीज आपने दिमाग में रखनी है, मैं इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ आपको समझ में आए। जहां पर भी ये नंबर होगा, मतलब न्यूमरल्स नहीं होंगे, उसका अपोजिट नंबर जो भी है दैट ऑलवेज कम इन डिनोमिनेटर, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। अगर ये यहाँ पे होता था तो ये डिनोमिनेटर में आता था। जहां पर भी ये होगा उसका क्रॉस नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। This one you keep in your mind. Is it clear? Now you can write like this way: 1.5 into EC equal to 3 into 1. Now see here multiplying, so it becomes now denominator. Therefore, EC equal to 3 upon 1.5. Now see, after decimal one number is there, we will remove this decimal, so automatically in upper side 0 will come, in this numerator 0 will come. So EC equal to 15 to the 30. So EC equal to 2. If you want to check, if you want to verify, now you got this one is 2. So 1.5 upon 3 equal to 1 upon 2. If you remove this one, then automatically it becomes 30. 51 is 50. 52 is 30. Equal to 1 upon 2. See, both are ratio are same. That's why these two are in proportion. Our answer is correct. There is no need to do this. But this is how to verify or check whether your answer is correct or not. That one I explained you here. Is it clear? Now see next one. Again same. AD upon DB equal to AE upon EC. Now you don't know AD, so AD you write as it is.
Same reason will come here, proportionality theorem. Each and every time I am not going to write. You have to keep it in your mind and you have to write. Now dB equal to 7.2. AE is 1.8 and EC is 5.4. Now can you tell me which number will come in denominator? See, अब अल्फाबेट कहाँ पे है? यहाँ पर इसके सामने जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस स्टेप. डायरेक्टली यू कैन राइट हियर AD इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4. मैंने बोला था ना, इसके सामने जो है ये नीचे आ जाएगा. सिंपल. 18 you just cancel. 18 ones are 18, 18 twos are 36, 18 threes are. Therefore, AD equal to 3 twos are 6 and 3 fours are 12. 2.4 centimeter. If you want to check, see, each and every time it is essential to write the unit down. Unit लिखना भूल नहीं जाना. Is it clear? Now you see here. Now you got AD 2.4. This is 7.2. This is 1.8 and this is 5.4. Remove the decimal from decimal. So it becomes 24 upon 72 and this becomes 18 upon 54. So 1 upon 3 because 18 ones are 18, 18 threes are 54. Okay, similarly 24 threes are 72, 3 fours are 12, 2 carry on 1, 3 4 6 and 1 7. So this one also 1 upon 3. It means whatever you have done, that is correct. Just see it, देख लीजिए जरा एक बार इसको. सो यू विल गेट द बेटर आइडिया. दिमाग में उतरेगा आप लोगों के, समझ में आएगा अच्छी तरह से. सो दिस वे यू हैव टू डू दिस. सी द नेक्स्ट वन. अगला सम और देखते हैं. नाउ सी चिल्ड्रन, सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन हियर इन 6.2. इट इज सेइंग दैट E and F are the points on the side PQ and PR. Okay, this one side is PQ and another side is PR and there are 2 points E and F respectively. Okay, for each of the following case, state whether EF parallel QR. Is EF parallel QR? 3 कंडीशंस आर गिवन देयर. लेट्स ट्राई टू चेक इट. उसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं. अब ये पैरेलल किस कंडीशन में होगा? यू नो दैट वेरी वेल. इफ दिस टू पार्ट रेशियोज आर इन प्रपोर्शन. इफ रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, दैट ओनली दिस लाइन विल बी पैरेलल टू QR. मींस EF पैरेलल QR, अदरवाइज नॉट. सो चेक इट वन बाय वन. फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है PE इक्वल टू 3.9. सेंटीमीटर and EQ is given 3 centimeter and PF is given 3.6 centimeter and FR is given 2.4 centimeter. Now you check whether EF is parallel to QR or not. So first, solution. This is the way to solve. First you have to write here PE upon EQ equal to PF upon FR. Okay, you are checking, so there don't write here proportionality as per proportionality theorem because you don't know this is parallel to this or not. Okay, so what is PE 3.9
This is 3. This is 3.6. This is 2.4. Now check it. 3 ones are, and here 3 ones are 3, 3 threes are 9. Okay, and here decimal if you will cancel, 12 threes are 36 and 12 twos are 2 upon 3. Okay, so 1.3 is not equal to 3 upon 2. Therefore, P upon EQ is not equal to PF upon FR. Therefore, EF is not parallel to QR by Propensity theorem or fundamental theorem. This is the way to represent it. Is it clear? See this, then do the next one. दूसरा वाला करते हैं इसके बाद में. I hope you have seen this. समझ में आया होगा कैसे करना है. फिगर नहीं रन करूंगा. Numbers I am going to change now. Second is given here PE, that is 4 centimeter. QE 4.5. PF 8 centimeter. And RF 9 centimeter. Okay, let's see it now. देखते हैं जरा. P upon EQ equal to PF upon FR. 4 upon 4.5. 8 upon 9. क्या लगता है मैच मेकिंग होगा? देखो, रिमूव द डेसिमल. नाउ 40 and 45 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 8 upon 9. Both are equal. Therefore, PE upon EQ, PF upon FR. Therefore, EF parallel QR by fundamental theorem. Is it clear? This is the way to do it. Now third one is remain that you have to do. आप लोगों को करना है. अब नेक्स्ट वन इज योर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. अब यहाँ पे मैं बहुत डीप में फोकस में आप लोगों को नहीं लेके जाऊँगा. रीज़न इज दैट 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल किए थे और उसमें आप लोगों ने सर्टेन क्राइटेरियाज देखे थे. विच वेयर दैट क्राइटेरिया याद है किसी को? तो हमारी याददाश्त बड़ी खतरनाक होती है भाई. इतनी जब इंडियन लोगों की मेमोरी मतलब बहुत डेंजर. वी आर वेरी टेकन टू ग्रांटेड पीपल, तो इसलिए जो है ज़्यादा दिमाग में रखते भी नहीं है.
वहां पर आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया के याद करो, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, RHS। इसमें मैं दो और ऐड कर देता हूँ, एंगल साइड साइड, एंगल 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 और एंगल एंगल। यानी in given correspondence, if two side and corresponding angle is congruent with the another triangle, then that is called the side angle side congruent. Now here the same thing is applicable to your what? Similarity. If both the triangles you want to make the similar, then ultimate condition is that this criteria should be fulfilled. For side angle side, corresponding sides should be proportion and its corresponding angle be congruent. Okay, then that will be fulfilled by side angle side. Suppose I am giving you just idea because you know very well, already we have done this. ये हम लोगों ने सब करके रखा हुआ है, इसलिए और बहुत डीप में बताया था भाई, इसलिए मैं भी ज़्यादा यहाँ पे सिर नहीं खपाने वाला, पहले बोल रहा हूँ मैं। ओके, सपोज दिस साइड इज 5, दिस इज 10, ओके, दिस साइड इज 7, दिस इज 14, ओके, and this corresponding angle is 50 degree. Then both are congruent, A, B, C, P, Q, R. Okay, so this both will be similar by side angle side similarity. Okay, for angle side angle, two angle and one side. Side, 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 all three sides should be in proportion. See, 5 into 10, 1 upon 2, 7 upon 14, 1 upon 2, suppose I am writing here, 4 upon 8, again 1 upon 2, side, side, side. One angle, any one angle and two side, and angle, 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 all three angles. Okay, so that is the criteria for similarity, and according to this, now we have to do the next exercise, and that is the 4.6.3. ओके, इसके बारे में हम लोग अगले इसमें सोचेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जाएंगे। चलो बाय, सी यू, टेक केयर।